So now next stage is Series A funding. So in this stage, what happens? Company stage, consistent growth, revenue. Revenue is there. We can show the consistent growth if it is, and it should be there if you'll go for the Series A funding. And who participates in that? Institutional VCs, large seed funds. जो प्रॉपर बड़े इंस्टीट्यूशनल वीसीज होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे कंपनीज की इन्वेस्टमेंट होती है, फिर वो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन एनालिसिस करके डीप डाइव करके आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर, उसके लिए आपकी कंपनी की स्टेज होनी चाहिए कंसिस्टेंट ग्रोथ। ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की तरफ आप जा रहे हैं, आपका रिवेन्यू $1 मिलियन का एवरेज रिकरिंग रिवेन्यू, एनुअल रिकरिंग रिवेन्यू सॉरी होना चाहिए, और इबिटा जो है या फिर होना चाहिए आपका पॉजिटिव। सो उससे जो है क्या होता है कि यू नो लार्ज इंस्टीट्यूशंस आप में इंटरेस्टेड होते हैं। सी व्हेन विल से रिवेन्यू $1 मिलियन प्लस और एनुअल रिकरिंग रिवेन्यू इज वन मिलियन डॉलर प्लस। सी उसमें क्या होता है कि एक जो इंस्टीट्यूशनल वीसीज जो होते हैं वो देखते हैं कि आपकी कंपनी में ग्रोथ है, ये आपने एक अपना रिवेन्यू रेट मेंटेन किया हुआ है, सो दे फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। फॉर देम your organization and you as an entrepreneur are doing well. And ऐसा नहीं है, it is not mandatory that only if you are in profit, only then these institutions will invest in you. If they can see the subsequent growth you have done in the past, you have a track record, you are doing very well, and even then you are burning some, amount, but in long run you will not, because sometimes the kind of product or kind of innovation or kind of uh, uh, evolution requires certain amount, they can also invest in that stage. But largely, if you can show the consistent growth, revenue, which is often $1 million annual recurring revenue, then the chances are higher that any institutional VC will invest in you. Here, investment expectations are very clear. When we'll say investment expectation, it means investors' expectation. Product market fit is already established, because only then you will be able to maintain this rate, no? Scalable customer acquisition channel, that you have already captured the customers from one region, and then they can see the scalability. Okay, we can reach out to other people, right? There are other channels we can tap. So, in such scenarios, investors are more interested, more keen, and they are always happy to investment. And then strong unit economics and monetization, right? When we say unit economics, that uh, cost of one product, complete cost, and then when you spend on marketing, and then salaries and taxes and everything, and at the end of the day what you earn on that uh, product, it is what we call you know unit economics, and it is very strong when you obviously getting revenue out of it, right? And then growing market with competitive mode. So the idea is, whenever you go for Series A funding, obviously it is a later stage, because funding amount is very high. It's around $2 million. It means 20 lakh dollars to 150 lakh. It means 15 million. It's a huge amount, and for investing such a huge amount, there should be a proven track record. I know that people who are listening to me right now majorly are at the very early stage of their, maybe at a very early stage of their businesses, or currently are planning to start a business. These kind of numbers will reach out to you, I'm sure, I believe.
But for that, we have to follow everything what we have learned so far. That is number one. Number two, these numbers, when you reach to these numbers, you will already be very, very, educated about everything by yourself practically, because reaching to this number is not a hunky dory. It requires a lot of persistence, a lot of discipline, a lot of involvement, a lot of learning, a lot of feedback, pivot. So many things is already involved, right? The idea of telling you this information is so that you should be, ready in your head that growth can be happen at any stage. And if you reach to that stage, right, if you plan your business, so at what stage you can expect X amount from the investors. So this is the whole idea of telling you, step by step, the stages of funding. Then the series B, then company stage, rapid scaling phase. When you have completely proven your medal and you are doing exceptionally well and things are going on good pace, because the amount is also very high, right? From $10 million to 50 million plus dollar. I mean, it's a huge numbers, right? Growth stage VCs and strategic investors are comes into the place. Another big level of venture capitalists, right? And then proven revenue model with strong growth, 30 to 100% year on year growth. If you can show this is the expectations of investors at that point of time, expansion into new market or product lines, right? You are adding new products or new marketing, sorry, new markets. It means that you already captured India, now you're going international market, or you have already proven uh, record of 10 products, now you want to add more to your SKUs, right? Your team, your operational infrastructure is on point. You already if you are making a physical product, then your factories are on point. Your human resources are set, your finances are set. Competitive differentiation and brand traction is completely on track. So, Series B kind of funding happens when you reach to a certain level, right? And I suggest you one thing, that once you start, reading about these stages of funding by yourself, as a recap of this session, or maybe you want to explore more, I would request you to, follow the trend of last 10 years and uh, go through it rigorously and try to find out that which organization or which brand, got Series B and Series A funding at what stage. So it would give you a better insight of it, you know. And I'll tell you one more thing. Uh, when we said after completion of module 2 that you should take this assignment and practically try to create a product or service with the help of your family and friends, if you're already doing it, then you should start, pitching them for funding as well, and also for series and series B. Do it. It would be fun and it would be learning for you, right? Because then you will be able to understand, you will be able to mark your loopholes by yourself, right? And you will be in a better understanding stage, so that when you actually reach to the market, when you actually go for any product or services, real basis, and find out the consumers, at that time you should have that thing in mind. Okay, so while I was doing that assignment, when I reached out for series A funding, series B funding, I have to reach at least, you know to that level, and then I can expect more. जब हम किसी भी चीज को विजन में अपनी लेकर आते हैं, तो हमको उसके कुछ स्टेप्स को भी अपने विजन में लाना चाहिए। एंड गोल, श्योर, सम ऑफ यू मस्ट हैव एंड गोल की मेरे को एक एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरे को एक 1000 करोड़ की कंपनी खड़ी करनी है, 100 करोड़ की कंपनी खड़ी करनी है। लेकिन वो 1000 करोड़, 100 करोड़ पे पहुंचने के लिए आपको पहले 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, ऐसे आपको छोटे टारगेट सेट करने पड़ेंगे।
और ये जो फंडिंग स्टेजेस को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि आपको समझ में आना चाहिए कि 0 to 10 में क्या है, 10 to 20 में क्या है, 20 to 40 में क्या है, राइट? इसका मतलब ग्रोथ कैसे होती है। एंड देन वी विल गो फॉर सीरीज सी एंड बियॉन्ड। सो व्हेन वी से सीरीज सी एंड बियॉन्ड, सो यहाँ पे जो टिपिकल इन्वेस्टर होते हैं वो होते हैं लास्ट स्टेज वीसीज। आप समझिए कि ऐसी वीसी जो कि प्रूवन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट देते हैं, राइट? एंड देन प्राइवेट इक्विटीज होती हैं, कॉर्पोरेट वीसी। ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ऐसे बिजनेसेस की जो बिल्कुल मैच्योर बिजनेस है, जो अब कह रहे हैं कि मेरे को अपने आप को आईपीओ लॉन्च करना है, मेरे को अपने शेयर्स देने हैं, है ना? मेरे को शेयर मार्केट में आना है। और नहीं तो जो एक्विजिशन की तैयारी कर रहा है कि मेरी कंपनी ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है, मेरा रन रेट बहुत ही बढ़िया है, मैं बहुत अच्छे रिवेन्यू में हूँ, मेरे को 5 साल हो गए हैं काम करते हुए, 3 साल हो गए, 10 साल हो गए, माई कंपनी इज डूइंग फिनोमिनल, हर चीज अच्छी चल रही है। अब मेरे को समझ में आता, मैं अभी तक ग्लासेस बना रहा था एंड आई एम डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। अब मेरे को लगता है कि मैं ना कॉन्टेक्ट लेंस की एक कंपनी है उसको एक्वायर कर लेता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं हाइपोथेटिकली। तो अब मेरे को एक्वायर करने के लिए, जिस कंपनी को एक्वायर करने जा रहा हूँ उसके लिए मेरे को 100 करोड़ चाहिए, तो मैं सीरीज सी एंड बियॉन्ड में जा सकता हूँ। ये एक एक ऐसी स्टेज के लिए होता है, एक्विजिशन के लिए, या फिर आपको आईपीओ लॉन्च करनी है उस स्टेज के लिए, राइट? इसके लिए एक्सपेक्टेशंस बड़ी सिंपल है, डोमिनेंट मार्केट पोजीशन, कि आप इतने डोमिनेंट हो कि आपका नाम हर कोई जान रहा है, ब्रांड जान रहा है, आपके नंबर्स बोल रहे हैं, है ना? आपके पास इतनी डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स है कि यहाँ से भी पैसा आ रहा है, एक्स जगह से आ रहा है, वाई जगह से आ रहा है, जी जगह से आ रहा है, तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट बैठता है कि ठीक है, इनके पास मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, राइट? आपके पास हर किस्म की एग्जिट स्ट्रेटजी है, आईपीओज है, मर्जर एंड एक्विजिशंस है, एंड उसके अलावा आपको लगता है कि अब हम और ज्यादा एक्सपेंशन की तरफ जा सकते हैं, है ना? और ज़्यादा बड़ी मार्केट को टैप कर सकते हैं। आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड ग्रोथ जो है वो प्रेडिक्टेबल है। कोई भी अभी आपको मार्केट में देख के कह सकता है कि अभी 10 साल तो ये बंदा कहीं नहीं आया, राइट? सो वो होती है सीरीज सी एंड बियॉन्ड फंडिंग। सो अभी तक जो हमने अंडरस्टैंड किया है क्विकली, वो है प्री सीड स्टेज, राइट? वेयरइन फाउंडर्स या फिर एंजल इन्वेस्टर करते हैं कंपनी की बहुत ही अर्ली स्टेज, आइडिया प्रोटोटाइप। सीड स्टेज एंजल इन्वेस्टर्स भी होते हैं और अर्ली स्टेज के वीसीज भी होते हैं। एमवीपी रेडी है, हम थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए यूज करना शुरू कर दिया है, राइट? एंड देन सीरीज ए, इंस्टीट्यूशनल वीसीज, बड़े वीसीज आ जाते हैं, लार्ज फंड्स आ जाते हैं, कंसिस्टेंट ग्रोथ हम दिखा रहे हैं, $1 मिलियन प्लस का हमारा एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू है, राइट? हम अच्छा कर रहे हैं मार्केट में, हमारा प्रोडक्ट फिट स्टेब्लिश हो चुका है, हम स्केलेबल है, कस्टमर एक्विजिशन बढ़िया चल रहा है। देन सीरीज बी फंडिंग, और बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, ज्यादा पैसा, $10 मिलियन से ऊपर, $50 मिलियन के आगे तक का पैसा इसमें हम ले सकते हैं, है ना? कंपनी बिल्कुल स्केल मॉडल पे है, 30 से 100% का ईयर ऑन ईयर हम ग्रोथ कर रहे हैं, हमको एक्सपेंशन करना है, नई मार्केट में जाना है, नए एसक्यूज लेकर आते हैं। एंड देन सीरीज सी एंड बियॉन्ड, वी हैव डिस्कस दैट, कि जब हम बिल्कुल एस्टैब्लिश हैं, कोई मर्जर एक्विजिशन करना है या फिर हमको आईपीओज करने हैं, तो हम इनके तरफ जाते हैं। इसके अलावा भी फंडिंग्स होती हैं जो बीच बीच में होते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रिज और कन्वर्टेबल राउंड्स, लाइक कैन अकर बिटवीन राउंड्स व्हेन स्टार्टअप नीड इन टर्म कैपिटल। कई बार होता है कि बीच में आप उनको पैसा चाहिए होता है, कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स आ जाते हैं, कोविड के टाइम पे हमने देखा था कई कंपनियों को ऐसी जरूरत पड़ी थी सस्टेन करने के लिए, राइट? एंड उस वक्त पे क्या होता है कि ठीक है, हम बीच में थोड़ा सा हम कहीं से पैसा ले लेते हैं, तो उस टाइप के स्मॉल राउंड्स भी बीच बीच में कई बार कंपनीज कर लेती हैं, राइट? Expectations are often similar to previous stage with an emphasis on reaching a specific milestone to qualify for the next round. इन्वेस्टर की वही एक्सपेक्टेशन होती है जो उस दौरान, अगर लेट सपोज आपने ये इन्वेस्टमेंट करी है, हम एक एग्जांपल लेते हैं हाइपोथेटिकली, कि आपने एक ब्रिज इन्वेस्टमेंट करी है, वो करी है आपने सीड स्टेज और ए सीरीज के बीच में, तो एक्सपेक्टेशन मोर और लेस वही रहेगी, राइट? कि जो सीड सेज की थी, लेकिन उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा प्रोमिनेंस उनको दिखेगा, थोड़ा और प्रॉमिसिंग दिखेगा, तो वो कर देंगे कि ठीक है, अच्छा कर रहे हैं इन्होंने, एक
प्री एक इन्होंने सीड स्टेज कम पहले इन्होंने प्री सीड स्टेज किया, अच्छा किया, फिर उन्होंने सीड स्टेज किया, अच्छा किया। अब सीरीज ए से पहले अगर उनको थोड़ा-सा और पैसे की ज़रूरत है तो वी कैन गिव, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा चल रहा है, उन्होंने जो प्रॉमिस किया था अभी तक डिलीवर किया, एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट करी हैं। इन दैट सिनेरियो दीज़ ब्रिज राउंड्स कैन बी डन एंड ये होते हैं। एंड इसके रीज़न वही होता है कि अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स और सम इमरजेंसी फंड्स रिक्वायर्ड और कुछ बिज़नेस में ऊपर-नीचे मार्केट में चला रहता है, तो वो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट इट कैन बी डन, बट लार्जली these are the stages of funding which every entrepreneur should know. बट अगेन मैं रिपीट करूंगा अपनी बात कि वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, नंबर वन। नंबर टू, अगर हम सीरीज ए, सीरीज बी और सीरीज सी के बियॉन्ड की स्टेज पर हैं, इसका मतलब हमने उसके पहले के जितने भी फंड्स हमको मिले थे हमने उनका यूटिलाइजेशन एक्यूरेटली किया है। अगर हमें प्री सीड स्टेज में फंडिंग मिली है और हम सीड स्टेज पर पहुंच गए हैं, इसका मतलब इट्स अ विक्ट्री फॉर यू एंटरप्रेन्योर्स बिकॉज यू हैव यूटिलाइज्ड दैट इन्वेस्टमेंट इन अ बेटर। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता ना कि इफ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर प्रीवियस फंड्स better and then you can get the next fund, it's not possible, right? So whenever you pitch, always give emphasis on these points. Understood, entrepreneurs? So now let's move to next step.